गोडनेथ अगर बी करो रातुक थोड़ा रिवाइज सो व्हाट डू वी मीन बाय रोल्स थ्योरम एंड व्हाट डू वी मीन बाय मीन वैल्यू थ्योरम ठीक है सो अस वने रात रोल्स थ्योरम it has three conditions ठीक है अगर tre conditions गसन एक फंक्शन आस tre conditions satisfy करन then the conclusion part is that there will exist a point C such that at that point slope of the tangent will be equal to slope of the tangent will be 0 or at that point that point is kya is that point is tangent throw size parallel to x axis ठीक है so three conditions as number first f was continuous f agar kah ti function ch such that f was continuous in closed interval a b f is continuous in closed interval a b yani a pet b s is a continuous graph and number second a pet b s ताइन open interval a b s ताइन हेको इस प्रात एकis point as differentiation करे derivative as exist गसान which means प्रात एकis point पे हेको इस tangent त्रित प्रात एकis point पे हेको इस tangent त्रित and number third f of a गसे आसन f of b is बराबर f of a is equal to f of b so if all the three conditions if all of the three conditions are satisfied then the conclusion part was that there will definitely exist a real number or there will exist a point c within the interval a b such that that point पे अगर इस क्या त्राओ tangent या that point पे अगर इस derivative करो the derivative of that point will be 0 so f dash of c is equal to 0 ठीक है so converse थी वुचा वैस रात so the main part is agar a function ch which satisfies all the three conditions what are the three conditions it has to be continuous it has to be differentiable the image of the starting point should be equal to image of the end point of the interval domain of definition so till as conclusion was till as a real number exist gasa such that f dash of c is kat barabar 0 barabar theek hai what was it is converse ti wuch is raat converse khadir kya hai अगर यम त्रे कंडीशन गसन सेटिस्फाई तेल f dash of c 0 बराबर कन्वर्स क्या होस अगर f dash of c 0 बराबर तेल आसन यम त्रिनवे कंडीशन सेटिस्फाई गसन यानी अगर डेरिवेटिव आइस फॉर सम पॉइंट और फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अगर डेरिवेटिव आइस का बराबर 0 बराबर देन द अबव थ्री कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड व्हिच मीन्स f dash of f has to be continuous in ab f is differentiable in open interval ab and f of a is equal to f of b अगर हम त्रिनवे कंडीशन गसन सेटिस्फाई तेल छ कन्वर्स तेम ट्रू ठीक है एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 so question number 1 छ इस वना verify Rolle's theorem for the function f of x is equal to so we have function given as f of x is equal to x square plus 2x minus 8 ठीक है while x belongs to interval क्या है -4 2 ठीक है x belongs to interval -4 2 ऐसे क्या है simply we have to verify the Rolle's theorem ठीक है verify मतलब अश वन अगर गोडनेथ वुचन त्रे कंडीशन सेटिस्फाई गसान अगर त्रे कंडीशन सेटिस्फाई गसान तिल वन देन देयर विल एग्जिस्ट ए पॉइंट सी यानी -4 पे 2 तान पॉइंट एग्जिस्ट गसान सच दैट तथ पॉइंट्स पे f dash of c यानी तथ पॉइंट्स पे डेरिवेटिव कत बराबर 0 बराबर ठीक है so first of all we have to check the three conditions of the Rolle's theorem ठीक है so it will be condition first what is the first condition गोडनेथ कंडीशन क्या है चेक कर f is continuous in closed interval a b f is continuous in closed interval a b ठीक है सो गोडनेथ अगर शो f of x क्या है x square plus 2x minus 8 so we can write since f of x is equal to x square plus 2x minus 8 यह हेकु तुम कंटिन्यूटी खतर युस कंडीशन तो हेकु यथ पॉइंट्स पे कह ति पॉइंट यथ इंटरवल्स मज कह ति पॉइंट नी तथ पॉइंट्स पे हेकु वनित क्या ये फंक्शन छा कंटिन्यूअस केन ठीक है सो मगर युस ये f of x it is a polynomial function and we know every polynomial function is continuous so polynomial functions are continuous everywhere so since f of x is equal to x square plus 2x minus 8 is a polynomial function ठीक है so as polynomial function it will be continuous everywhere ठीक है so being a polynomial function यह है कि तो इत पर लिखित being a polynomial function f of x is equal to this is continuous everywhere it is continuous everywhere ठीक है in particular अगर ये सारी real line पे continuous in particular यह ना यह intervals में continuous so therefore we can write in particular
in particular, so fx is equal to x square plus 2x minus 8 is continuous in kath intervals mas is continuous in -4 2 is continuous in -4 2 ठीक है. So this is first condition. दोयम condition क्या है? f of x is differentiable in open interval ab ठीक है. इस वुचन के in open interval -4 2 ताई छाए differentiable के न केन यानी इस हेको derivative कड़ियत के न केन. अगर इस derivative करो will that derivative exist? So that means we have to find simply the derivative of this function. So we have f dash of x is equal to x square. What will be derivative of x square? 2x plus 2 ठीक है. 2x plus 2 अगर इस कांति वैल्यू दिमो within this interval ठीक है. ये ना बना finite real number. So इमेक मतलब it is defined in open interval ab. So you can write which exists in simply अगर इस याद लिखो which exists in open interval -4 2 which exists in open interval -4 2. One condition gets satisfied. Dream condition क्या is dream condition? f of a is equal to f of b. What is a here? -4 ठीक है. यानी अच्छे हाउन तेल f of -4 गए आसन क्या f of 2. f of -4 is equal to f of 2. Now we have to compute f of -4. Now f of third condition. So f of -4. What is f of -4? f of x का बराबर x square plus 2x minus 8. So f of -4 will be -4 square ठीक है plus 2 into -4 minus 8 ठीक है. This will be 16 minus 8 which will be 0 ठीक है. So f of -4 का बराबर 0. What will be f of 2? 2 square plus 2 into 2 minus 8. So this will be again equal to 0 ठीक है. ये ना 0. So that means f of -4 is equal to f of 2. So therefore f of -4 is equal to f of 2 ठीक है. Which means all the conditions of the Rolle's theorem are satisfied. What will be the conclusion? Then there exists a point c ठीक है. अच्छे वुचन क्या अच्छा point exist गसान such that f dash of c is equal to 0. अगर इस point थ्यो कस सणित such that f dash of c is equal to 0 and that point lies in this interval till वनो इस Rolle's theorem गई verify ठीक है. We have to simply verify the Rolle's theorem यानी अख point युत exist गसान in open interval ab such that तथ point पे क्या f dash of c is equal to 0 ठीक है. So therefore all the conditions of the Rolle's theorem are satisfied ठीक है. एतन लिखिए तुई पाने all the conditions of the Rolle's theorem are satisfied. So therefore there exists c belonging to open interval क्या है -4 2 ठीक है. such that f dash of c is equal to 0 ठीक है. What is f dash of x? f dash of x है ना 2x plus अगर वो f dash of x is equal to this याथ में जन दिमो इस क्या excess value c ठीक है. याथ ही इक्वेशन f dash of x is equal to 2x plus 2. What will be f dash of c? So therefore we will have 2 f dash of x का बराबर है 2x plus 2. f dash of x is 2x plus 2. What will be f dash of c? Simply दिमो याथ इक्वेशन में excess value c. So it will be 2c plus 2. So it will be 2c plus 2 is equal to 0. 2c plus 2 is equal to 0. C is constant. So 2c is equal to -2 ठीक है. c is equal to -2 divided by 2c is equal to -1. क्या -1 छा या -4 पे 2 साइन बिलोंग करा exactly. So we can write c यानी इस पॉइंट द्राव इस -1 which belongs to -4 2 ठीक है. So this point lies in this interval. So that means Rolle's theorem गई verify. So Rolle's theorem is verified. समझ आया verify करने का मतलब अच्छे वन के यूस इट पॉइंट इस नेर या तो open intervals में क्या वाकई छा सो पॉइंट belong करा within this open interval. अगर सो belong करन but under the given three conditions अगर सो belong करन then the Rolle's theorem is verified ठीक है. लिखिए f of x is equal to greatest integer x ठीक है. f of x is equal to greatest integer x where x belongs to
5 9 ठीक है, x belongs to interval 5 9, x belongs to 5 9. So that means function is it put. So we have function f defined by f is a function defined by x का सिर्फ गैस match greatest integer x से greatest integer x, greatest integer x is definition चेस already पढ़ो function में. So greatest integer x का बराबर चासा x से बराबर when x is an integer. So greatest integer x is equal to x when x is an integer. When x is an integer, इम साथी integer आसी greatest integer x से आसान सुई integer वापस ठीक है. As an example हमने देखा greatest integer 3 का बराबर आए 3, greatest integer 3.1 से 3 is बराबर ठीक है. It is equal to an integer less than x, an integer less than x if x is not an integer ठीक है. So integer use m number खोद यानी 3.1 खोद less आए and that happens to be 3 ठीक है. ऐसे details में already उसमें functions में. So greatest integer 3.1 that is equal to 3, greatest integer 3.2 3, greatest integer 3.9 3, greatest integer 4 greatest integer 4.1 4 ठीक है. So exactly चेस ये इथे पढ़ी जाता नहीं greatest integer function defined but कत पे कोर दाई च 5 पेट 9 ताई ठीक है. 5 पेट 9 ताई अच्छे वनुन क्या Rolle's theorem सारे condition गसना ये satisfy के न के. Number first it has to be continuous in कस्मस closed interval 5 9 interval chess already did. It has to be continuous in closed interval 5 9 ठीक है and differentiable in open interval 5 9 ठीक है. f of a is equal to f of b. अगर त्रियो कंडीशन में कंडीशन पे ठीक है, त्रियो कंडीशन में कंडीशन सेटिस्फाई गसान क्या वी कैन से Rolle's theorem is not applicable. इस हेको नहीं अप्लाई करिए क्या Rolle's theorem अप्लाई करने खतर त्रिनवे कंडीशन मैंडेटरी ठीक है. त्रिनवे कंडीशन जरूरी ये त्रे कंडीशन गसन सेटिस्फाई तिले हेको इस कंक्लूजन ड्रॉ कर ठीक है. सो गणित वुचन क्या त्रिनवे कंडीशन सेटिस्फाई गसान कह ठीक है. फर्स्ट कंडीशन विल बी f use function chess over that we have to see whether that is continuous in ab means 5 9 ठीक है. we know greatest integer function is continuous or second discontinuous. Greatest integer function it is discontinuous or discontinuous it is discontinuous ठीक है. अच्छे वुचमत already greatest integer function it is discontinuous at every integral value greatest integer function is discontinuous at every integral value. Even differentiation must it is not differentiable at integral values. Greatest integer function is not continuous at integral values. Greatest integer function is not differentiable at integral values. Suppose as an wucho image graphs and wucho is ठीक है. graphs and wucho is 5 to 9 ठीक है. Say this is 5 here, say this is 5 here and this is 9 here ठीक है. 5 पेट 9 ताइन 5 पेट say this is 6 this is 7 ठीक है. isn't suppose 8 and say this is 9 5 पेट 9 ताइन अगर इस ग्राफ त्राओ ठीक है. 5 पेट 9 ताइन. so what will be greatest integer 5 का बराबर है isn't y value ठीक है. that will be equal to 5. greatest integer 5.1 5 ठीक है. greatest integer 5.9 ताइन सो कत बराबर है 5 ठीक है. so it will be a graph like this. ये पे यू होता है कत सेक्शन में 5 to 6 ठीक है. 5 to 6 क्या है 5 ठीक है. but when we move to 6 ठीक है 6 तम साथ क्या है यादन 6 ठीक है. यादन 6 then we will have 6.1 as 6 6.2 as 6 up to 6.9 ताइन क्या है 6 ठीक है. उसके बाद फिर 7 इन साथ और दिमो 7 क्या है 7 ठीक है. then 7.1 is 7.2 7 so it will be a graph like this 8 ways गई be break. यह continuous graph माशी continuous graph so तिल वनो इस क्या ये अगर अकी कंडीशन गई satisfy कहीं ठीक है. so we can simply say कि ये function चेन satisfy गसा कहीं ठीक है. so Rolle's theorem is not applicable. so we can write f of x is equal to greatest integer x for all x belongs to 5 9 is discontinuous for all integers ठीक है. for all integers lying
lying between 5 and 9 ठीक है, including 5 and 9 ठीक है, including 5 and 9. So therefore fx is not continuous, fx is not continuous in closed interval 5 9 ठीक है. अ कंडीशन गई न सेटिस्फाई कहीं मतलब बाकी कंडीशन चेक करने जरूरत थी ठीक है. अगर चेक पेन तक वी नो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फॉर इंटेग्रल वैल्यूज मगर नॉन इंटेग्रल वैल्यू खतर डिफरेंशिएबल ठीक है. नॉन इंटेग्रल वैल्यू खतर क्या डिफरेंशिएबल. अगर एफ ऑफ एक्स नाउ इफ वी राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वजन कन्वर्स ठीक है. कन्वर्स जन से अमुक क्वेश्चन. सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन 5 9. सो देयरफॉर अस लिखो डायरेक्ट कंक्लूजन रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. So Rolle's theorem is not applicable ठीक है. अम पे क्या वुचन we have to see it is converse. Converse मज क्या गई आसन अगर f dash of c is equal to 0 does that mean कि अगर डेरिवेटिव कत बराबर 0 बराबर does that mean कि बाकी कंडीशन त्रे कंडीशन गना सेटिस्फाई कहें ठीक है. सो if f dash of c is equal to 0 ठीक है यानी a पे वो कह वैल्यूज नमो कत पे 5 पे 9 तान 5 पे 9 तान अगर कह वैल्यू नमो तम खतर अगर डेरिवेटिव कत बराबर 0 बराबर डज दिस मीन कि रिमेनिंग कंडीशन द 3 कंडीशन दे आर सेटिस्फाइड और नॉट समझ आया ठीक है. सो गो वो क्या f dash of c 0 बराबर कहें. व्हाट इज C is any point lying between A, B. C is any point lying between A, B. A, B means A, B is the open interval 5 9. यानी 5 पे 9 से अगर इसका वैल्यू निमो तम खतर गस डेरिवेटिव आसन कत बराबर 0 बराबर ठीक है. सो वी कैन राइट नाउ फॉर कन्वर्स. सो नाउ f dash of x is equal to 0. F dash of x is equal to 0. F dash of x is equal to 0 for all x belonging to 5 9. For all x belonging to 5 9. समझ आया f dash of x is 0 for all x belong to 5 9 ठीक है. क्या देखिए 5 पे 9 तान युस त पॉइंट निमो युस x निमो तम खतर क्या f dash of x is equal to 0 क्या तिक 5 पे 9 तान युस क्या कांस्टेंट 5 पे 9 तान युस वैल्यू निमो सह क्या कांस्टेंट इज डिफरेंशिएशन 0. सो f dash of x is equal to 0 for all x belong to 5 9 ठीक है. यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई गसान. बट व्हाट डज दिस मीन अमुक मतलब गो कन्वर्स अगर ट्रू आसे अमुक मतलब यम कंडीशन सम कंडीशन इम्प्लाय गसान कहें समझ आया यम कंडीशन यानी f dash of c is equal to 0 सम कंडीशन इम्प्लाय गसान कम साथ गसान यम साथ f dash of c is equal to 0 हाई है कि f is continuous, f is differentiable, f of a is equal to f of b ठीक है. बट वी नो कि युस ये कंडीशन it is not continuous, the function is not continuous ठीक है. So therefore f dash of x is equal to 0 for all x belong to 5 9 but f is not continuous. So f is not continuous ठीक है. f is not continuous in 5 9 closed interval 5 9 ठीक है. what does this mean? The converse of the Rolle's theorem is not true ठीक है. So converse of the Rolle's theorem is not true ठीक है. So Rolle's theorem conversion true आसान in general वो शो Rolle's theorem in general so the converse of the Rolle's theorem is not true in general समझ आया ठीक है. So B कर भी repeat ऐसे वन गॉड f of x is equal to greatest integer x within the interval 5 to 9 यह फंक्शन पे हेकवाइस रोलर्स थ्योरम अप्लाई करित कहें ठीक है. तम खतर क्या गो चेक कर कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल तो क्या f of a f of b त्रोनवे कंडीशन गसान सेटिस्फाई गसान. अगर कंडीशन गई ना सेटिस्फाई कहें हेको डायरेक्ट कंक्लूजन कड़ित कि रोलर्स थ्योरम हेको अप्लाई करें ठीक है. गो वो कंटिन्यूटी ऑलरेडी पता उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यह कंटिन्यूअस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटेग्रल वैल्यू एंड इवन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटेग्रल वैल्यूज. 5 पे 9 तान ठीक है. 5 अत मे कुछ इंटीजर 5 6 7 8 9 ठीक है. 5 तो 9 अगर इंक्लूड करो सो ओबियसली उमन फंक्शन उमन वैल्यू पे क्या
discontinuous. ठीक है, अमन वैल्यून पे आसे discontinuous because we know the behavior of the graphical behavior चीज़न वुचो is behavior of the greatest integer function. So it is a ladder type. ना ladder type चेस function बना. So it is f of x is equal to greatest integer. So x belonging to 5 9. So is discontinuous. So clearly you see function is yours क्या? It is discontinuous for every integral value lying between 5 and 9. ठीक है. So therefore f of x is not continuous in 5 9 ये f of x यानी हमो त्रे कंडीशन मज गए गोडनिची कंडीशन गई फॉलो कहीं. दैट मीन्स Rolle's theorem is not applicable. Conversus मज क्या उस वुचुन conversus मज वुचुन अगर अख पॉइंट within that interval 5 9 लाई गसान such that तथ पॉइंटस पे अगर क्या निमो डेरिवेटिव सो डेरिवेटिव अगर 0 बराबर ओस. ठीक है, कन्वर्सस मज अगर डेरिवेटिव ओस अकिस पॉइंटस पे 0 डज दैट इम्प्लाई कि युम रेस्ट ऑफ द 3 कंडीशन तुम गसन सेटिस्फाई कन्वर्स मतलब ई. ठीक है, यानी अगर डेरिवेटिव ओस क्या अगर सी ओस लाई गसान बिटवीन ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 डज दैट मीन कि युम 3 कंडीशन गसन फॉल कंटिन्यूअस ते डिफरेंशिएबल ते f of a is equal to f of b. ठीक है, मगर ऐसे वुच अगर इस x for all x belonging to a b for every point within 5 9 5 पे 9 ताई युस ते पॉइंट इस निमो 5.1 5.2 5 है को नहीं इतनी कि इवन अगर इस 5 ते निमो. ठीक है, 6. So it will be f of x is equal to 6. f of x is equal to 6 is in x's value 6. f of x is equal to 6. तमें differentiation क्या है? f dash of x is equal to 0. चाहे constant differentiation है 0. यानी f dash of x is equal to 0 for all x belong to 5 9. ठीक है, f dash of it is constant here because 5 to 9 is value दिन. So अमुक मतलब f dash of x छ 0 बराबर ये क्या गछे तेल इम्प्लाई करूँ क्या ये छा इम्प्लाई करना f छ कंटिन्यूअस ना. So अस्कुर but f is not continuous in 5 9. This means the converse of the Rolle's theorem is not true. Converse के साथ आसे true. के साथ f dash of c is equal to 0 करे imply f is continuous, f is differentiable, f of a is equal to f of b. ठीक है, मगर ये छ 0 बराबर but still हम condition चन fall गसा. That means the converse of the Rolle's theorem is not true. समझ आवा? Right. So question number 2 part second है exactly शी question number 1 एक पे डिगर जो पाने हाँ तक वाये. So question number 2 3 part f of x is equal to x square minus 1. ठीक है, exactly करे आवाज़ रात आ question युत है f of x is equal to x square minus 1 where for x belonging to 1 2. ठीक है, for x belonging to 1 2 गोडनेट चीज वुशन Rolle's theorem में सारी कंडीशन चाहिए satisfy करना के ना किन. What will be first condition? It has to be continuous. ठीक है, इस पर इस रात लिखा गोडनेट since f of x is equal to x square minus 1 is a polynomial function and polynomial functions are continuous everywhere. In particular they will be continuous in interval 1 2. ठीक है, यानी continuity हंस जिस condition च सुच satisfy गसा it is continuous. So differentiable अगर इस वुचो दोयम condition. So f of x is equal to x square is differentiation 2x. So that is 2x. 2x जो exist गसान. ठीक है, 2x अगर इस x belonging to 1 2 अगर इस x से जमो 1 पे 2 असें कहती वैल्यू तेम खतर इन f dash of x is equal to 2x in undefined term कें. ठीक है, so the derivative exists in the open interval 1 2 यानी दोयम condition ते गए satisfy. What is third condition now? f of a is equal to f of b. What is a here? 1. What is b here? 2. ठीक है, so as गए until f of 1 का बराबर f of 2 f of 1 is equal to f of 2. Now what is f of 1? f of 1 is equal to 1 square minus 1. That will be 0. ठीक है, what will be f of 2? 2 square minus 1. So this will be 3. ठीक है, f of 1 is 0, f of 2 is 3, which means f of 1 is not equal to f of 2. F of 1 is not equal to, hence Rolle's theorem is not applicable. Hence the Rolle's theorem is not applicable. Because Rolle's theorem apply करने खतर क्या गसन आसान त्रिनवाई condition satisfy गसान मगर आ condition चिन satisfy गसान किन. That means Rolle's theorem is not applicable. ठीक है, now converse
converse f dash of अगर सपोज कह पॉइंट निमो ठीक है ये मज निमो एक्सस कह वैल्यू एक्सस निमो कह वैल्यू से 1.1 ठीक है 1.1 1.1 at 1.1 f dash of 1.1 what will be that 2 into 1.1 2 into 1.1 so my 0 is बराबर ठीक है यानी f dash of x is equal to 0 for no point within this interval x belonging to 1 2 ठीक है so that means converse of the Rolle's theorem is also not true समझ आया लिखिए इट इज एनी जनरल फंक्शन यमुक डोमेन क्या है -5 रेंज आए सेट ऑफ रियल नंबर्स अच्छे और वन कि यह फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल बी क्या ब्या कंडीशन सेटिस्फाई करान सच दैट f डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी f डैश डिराइवेटिव क्या 0 बराबर कहें एनीवेयर कुन पॉइंट खर डिराइवेटिव 0 बराबर कहें f डैश ऑफ x डज नॉट वेनिश f dash of x does not vanish यानी ये वैल्यू इन कत 0 बराबर कहें फॉर एनी पॉइंट विच लाइज फॉर एवरीवेयर मतलब इन पर्टिकुलर यानी कुन पॉइंट्स खतर अगर ये डिफरेंशिएबल क्या अगर अमुक डिराइवेटिव 0 बराबर कहें सो दैट मीन्स हेको इन पर्टिकुलर हेको वैल्यू दित क्या एक्सस -5 पे 5 तान समझ आया वन और फंक्शन इट इज डिफरेंशिएबल सच दैट कि अमुक डिराइवेटिव 0 बराबर कहें ठीक है डिराइवेटिव यानी f डैश ऑफ x 0 बराबर कहें इन पर्टिकुलर अगर कत पे निमो -5 पे -5 तान देन -5 to 5 then we had to show that f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है अगर इस कंडीशन वो Rolle's theorem त्रे कंडीशन क्या f has to be continuous in -5 5 f has to be differentiable in -5 5 ठीक है f has to be differentiable in open interval -5 5 then f of -5 is equal to f of 5 f of -5 is equal to conclusion क्या हो तिल पॉइंट एग्जिस्ट गसान सच दैट f dash of that point suppose पॉइंट जन c f dash of c is equal to 0 ठीक है अगर ये कंपेयर करो ये स्टेटमेंट कत Rolle's theorem वन और f dash of c 0 बराबर ठीक है f dash of c यानी कह युथ पॉइंट यम खतर डिराइवेटिव आ 0 बराबर एंड अम पे कुछ कंटिन्यूटी कंडीशन सह दिख कहें ठीक है मगर कंडीशन कुछ f is differentiable but we know from the continuity and differentiability use the function differentiable as that is continuous differentiability implies continuity every differentiable function is continuous does continuity imply differentiability na kya is modulus function as an example modulus function continuous function but it is not differentiable at x is equal to 0 यानी तथ पॉइंट्स पे ग्राफ where it lands on the x axis पे ये लैंड करान so as an example if we have mod of x minus a ये कदम लैंड करान x axis पे at x is equal to a यह पॉइंट्स पे लैंड कर अथ पॉइंट्स पे क्या डिफरेंशिएबल कहें although it is continuous everywhere so differentiability does imply continuity every differentiable function is continuous और वन कि function it is differentiable लिहाजा क्या continuous ठीक है लिहाजा continuous so that means differentiability condition कर satisfy differentiability दिख अमुक मतलब यह continuous ये condition गई satisfy Rolle's theorem apply करने खतर क्या गई यह गई कंडीशन सेटिस्फाई करें ठीक है अगर ये त्रोनवे कंडीशन कर सेटिस्फाई व्हाट वाज द कंक्लूजन देन तिल लाजमन पॉइंट एग्जिस्ट गम खतर क्या डिराइवेटिव कत बराबर 0 बराबर मगर और क्या वन और वन डिराइवेटिव 0 बराबर कहें ठीक है आउट ऑफ दिस कंडीशन वी हैव टू शो f of -5 is not equal to f of 5 f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है सो हियर ये स्टेटमेंट प्रूव करने खतर विल यूज द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ठीक है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अब देखिए प्रूव सो गणित अगर शो सिंस f is differentiable since f is differentiable in
in -5 5 ठीक है, f is differentiable in -5 5 and every differentiable function is continuous ठीक है, so therefore f is continuous. So f is continuous in -5 5 ठीक है, f is continuous in closed interval -5 5 ठीक है. then है कि reason लिखित because every differentiable function is continuous ठीक है, यानी ज condition गए satisfy. so त्रीम condition क्या है satisfy करें अच्छा हाउन f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है. now to show f of -5 is not equal to f of 5 f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है. अगर इस ज्यादा में method of contradiction करो apply say if we write if possible अगर possible छु if possible f of -5 zan छु f of 5 बराबर if possible f of -5 is equal to f of 5 अगर possible छु f of -5 is equal to f of 5 what does this mean एमुक मतलब कि अगर f छु अगर त्रिनवे condition करो इस combine f is continuous in -5 5 f is differentiable in -5 5 and f of -5 is equal to f of 5 what does this mean all the conditions of the Rolle's theorem are satisfied ठीक है. यानी कम अज कम अख पॉइंट एग्जिस्ट गसान यम खतर डेरिवेटिव आइस 0 बराबर मगर अश ओरे वनान डेरिवेटिव छन कुन ते पॉइंट खतर 0 बराबर कह ठीक है. एमुक मतलब युस ये सपोजिशन छ यदन करन ये सपोजिशन आइस रॉन्ग सो एमुक मतलब f of -5 आइस not equal to f of 5 समझ आया ठीक है. so if possible f of -5 is equal to f of 5 ठीक है. so therefore all the conditions of Rolle's theorem are satisfied all the conditions of Rolle's theorem are satisfied all the conditions of Rolle's theorem are satisfied what does this mean so therefore there exists c belonging to -5 5 such that f dash of c is equal to 0 ठीक है. f dash of c is equal to 0 ये द्राव पॉइंट such that f dash of c is equal to 0 मगर अश ओरे वनान कि f dash of x is equal to not equal to 0 f dash of x कुन ती वैल्यू खतर 0 बराबर मगर ये क्या द्राव c पॉइंट यम खतर डेरिवेटिव आ 0 यानी ये केस छन पॉसिबल आयत कह ठीक है. ये केस कम से ये ये कंसीडर कोर कि f of -5 छु f of 5 बराबर ठीक है. सो एमुक मतलब अगर ये स्टेटमेंट द्रा गलत तेल क्या छु ये स्टेटमेंट ते गलत f of -5 is not equal to f of 5 and this concludes that f of -5 is not equal to f of 5 ठीक है. so which is so so therefore which is a contradiction to the given statement that f dash of x is not equal to 0 f dash of x is equal to not equal to 0 for any value so what does this mean so therefore f of -5 is equal to f of 5 f of -5 is equal to not equal to f of 5 ठीक है. बी कर बी रिवाइज देखिए अश्योर क्वेश्चन वन है so we have a function f is a function from -5 5 to r ठीक है such that अश और it is differentiable यानी differentiable छु मगर एमुक वैल्यू यानी f dash of x is not equal to 0 एमुक डेरिवेटिव छन 0 बराबर यवान कह ठीक है. अश वन कि f of -5 छन f of 5 बराबर कह ठीक है. f of -5 is not equal to f of 5 since function is given to be differentiable what does this mean it is continuous as well ठीक है. it is continuous as well अस क्या छाउन f of -5 is not equal to f of 5 अस क्या कुरियादन if possible f of -5 is equal to f of 5 ठीक है. then अगर ये डिफरेंशिएबल ते कंटिन्यूअस ते f of -5 f of 5 बराबर ते व्हाट डज दिस मीन सारे कंडीशन गए Rolle's theorem हिंद satisfy अगर सारे कंडीशन गसन satisfy then we will be able to find a point c within the open interval -5 5 such that that point is पेड़ derivative 0 बराबर such that f dash of c is equal to 0
मगर अमुक मतलब अस हेक अख पॉइंट छड़ित यम खतर क्या डेरिवेटिव आ 0 बराबर मगर अस वनान ओरे क्वेश्चन में डेरिवेटिव कुन त पॉइंट खतर 0 बराबर कहें ठीक है मगर इस यतन यह वैल्यू यह क्या तेल इस ओरिच कंडीशन तथ कंडीशन क्या कंट्राडिक्ट करान तथ मुखालिफ स्टेटमेंट हूँ वन एफ डैश ऑफ एक्स कुन त पॉइंट खतर 0 बराबर कहें मगर यह द्राव अख पॉइंट साइज दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 यानी अस द्राय तेल कंट्राडिक्शन और स्टेटमेंट तमिच कंट्राडिक्शन मगर यह कंट्राडिक्शन कित पे गई हासिल ये एज्यूम कोर कि एफ ऑफ -5 एफ ऑफ 5 बराबर ठीक है यानी ये स्टेटमेंट द्रा कंट्राडिक्ट बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 अगर वो ये ठीक कहें अमुक मतलब ये स्टेटमेंट तक ठीक कहें यानी अगर वो इक्वल कहें तेल क्या नॉट इक्वल सो एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5 समझ आवा लिखिए अब So question number 4 is f of x is equal to x square minus 4x minus 3 in interval a b. What is value of a and b? A value क्या है 1 and 4. So in interval 1 4 mean value theorem है mean value theorem में क्या है where only two conditions. So गणित condition क्या है it has to be differentiable in 1 4 it has to be continuous in 1 4 it has to be differentiable in open interval 1 4 ठीक है conclusion then there exists a point c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a f of b minus f of a divided by b minus a ठीक है गणित कंडीशन वो it should be continuous ठीक है b अगर इस ओतामुक स्टेटमेंट लिखो f of x is equal to x square minus 4x minus 3 ठीक है so f of x being polynomial function is continuous everywhere in particular it will be continuous in 1 4 ठीक है सो ये लिख जो पाना स्टेटमेंट है सो being polynomial function f of x is equal to so being polynomial function f of x is equal to x square minus 4x minus 3 is continuous everywhere in particular it will be continuous in 1 4 ठीक है now second statement use it has to be differentiable for that I should go to differentiation करें so f dash of x is equal to it will be x square का derivative 2x minus 4 2x minus 4 ये गो अमुक derivative ठीक है वो 1 पे 4 तान so 1 पे 4 तान अगर इस कह ती वैल्यू दिमो यात x so it will clearly exist ये कुन ती वैल्यू खतर undefined के ठीक है so we can write which exists so derivative use which exists gasan so which exists for all x belongs to 1 4 for all x belongs to 1 4 ठीक है so all the conditions of the mean value theorem are satisfied which is the conditions so therefore conclusion will be there exists a point c so therefore there exists c belonging to open interval 1 4 such that f dash of c is equal to f of b f dash of c is equal to f of b what is f of b f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1 which is simply your values compute current we have to compute f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1 ठीक है now so f dash what is f of 4 minus f of 1 so f of 4 का बराबर f of 4 यहाँ कैलकुलेट कीजिए f of 4 so it will be 4 square minus 4 into 4 minus 3 so that will be minus 3 so f of 4 is equal to minus 3 what will be f of 1 it will be 1 square minus 4 into 1 minus 3 ठीक है समझ आया 1 minus 4 minus 3 so this will be equal to minus 6 ठीक है so therefore we have f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1 is equal to f of 4 minus 3 minus into minus 6 divided by 4 minus 1 what is that so it will be minus 3 plus 6 divided by 3 so it will be 3 by 3 which is equal to 1 ठीक है यानी f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1 is equal to 1 समझ आया now we will see f dash of c so therefore f dash of c is equal to 1 f dash of c is equal to 1 implies f dash of x what is f dash of x equal to 2x minus 4 ठीक है यात में त्राव c s value क्या so we have
f dash of x is equal to 2x minus 4 cha. What will be f dash of c now? So therefore f dash of c, x is the value c, so it will be 2c minus 4. So therefore 2c minus 4 is equal to 1. ठीक है, 2c minus 4 is equal to 1. So 2c is equal to 5, c is equal to 5 divided by 2, and 5 divided by 2 is 2.5. वुचो क्या 2.5 छा लाइक गसान 1 पे 4 इस दरमियान. ठीक है, so 2.4 छु लाइक गसान 2.5 छु लाइक गसान between 1 and 4. So therefore the mean value theorem is verified. ठीक है, mean value theorem is verified. Verify in the sense ऐसे वना कि अगर the conditions, if the conditions of the mean value theorem are satisfied, till ice yet intervals must 1-4 pet 1 to 4 of point exist such that that point is pet क्या f dash of c का बराबर f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1, any existence of such a point. So obviously 2.5 is such a point yet pet yum conditions आसन hold gasan. ठीक है, so that's why these theorems are called existence theorems and they guarantee the existence of such a point. ठीक है, लिखिए x cube minus 5x square, x cube minus 5x square minus 3x. ठीक है, in the interval a b where a is equal to फिर से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3. ठीक है, so in purchase wanna find all c belonging to 1 3 for which f dash of c is equal to 0. ठीक है, so again we have f of x is equal to x cube minus 5x square minus 3x. Question number 4 is to be question number 5 is much इसी फर्क. Question number 4 was क्या, that was quadratic function ये क्या है cubic function अगर इस derivative उछो cubic function power छना अगर reduce, so it will be 3x square. अगर सु पत solve करो तकन क्या 2 points ये तो आना c is equal to 2.5 ये 1 point आत मज क्या 2 point. ठीक है, यह question is to be question number 4 मच इसी फर्क. So we will have 2 points here. So again f of x is equal to x cube minus 5x square minus 3x being a polynomial function, it is continuous everywhere, in particular it will be continuous in 1 3. इक्वल लिखे. So उसके बाद second condition, so f dash of x is equal to it is 3x square minus 10x minus 3. ठीक है, 3x square minus 10x minus 3 which is differentiable for every point in 1 3, which is differentiable for every point in 1 3. ठीक है, यानी दूसरी condition ते guys satisfy, that means all the conditions of the mean value theorem are satisfied. So that means there will exist a point c in open interval 1 3 such that f dash of c is equal to f of b minus f of a. So we'll have f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ठीक है, so we'll write, so therefore all the conditions of mean value theorem, ठीक है, MVT mean value theorem are satisfied. So therefore there exists c in open interval 1 3, such that f dash of c is equal to f of b यानी f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. ठीक है, वो क्या चीज कंप्यूट करूँ f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. ठीक है, so it will be f of 3. now f of 3 is equal to, अगर तो डायरेक्ट है कि याद करिए कि तो एक के साथ सोरे कैलकुलेट करें. so f of 3 what is f of 3 cube minus 5 into 3 square minus 3 into 3. What will be this? 27. शाबाश कंप्यूट कीजिए जल्दी. 27 minus 5 into 9 minus 9 कुताई 27. शाबाश 27 minus 45 minus 9 कुता minus 27. ठीक है, minus 27. so 20 minus 45 minus 49, this will be minus 54. minus 54 is 27, so it will be minus 27. so this is f of 3. what will be f of 1 cube minus 5 into 1 square minus 3 into 1. so what will be that? 1 minus 5 minus 3 kutai minus 7. ठीक है, so f of 1 is equal to minus 7. समझ आवा. ठीक है, so now
f dash of c is equal to f dash of c is equal to f dash of c. What will be f dash of c is equal to f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1 implies f dash of c. What is f dash of c? f dash of x का बराबर है 3x square minus 10x minus 3. यात में चाहिए simply x has given value c. So it will be f dash of c is equal to 3c square minus 10c minus 10c minus 3 is equal to f of 3. What is f of 3? Minus 27 plus 7. ठीक है, minus into minus plus divided by 3 minus 1. 3 minus 1. ठीक है, 7 minus 27 ये कितना है? minus 20 divided by 2 minus 20 divided by 2 which will be minus 10. ठीक है, या अगर वो योर करो shift so it will be 3c square minus 10c plus 7 is equal to 0. ठीक है, plus 7 is equal to 0. 3c square minus 10c plus 7 is equal to 0 which is quadratic in c. लिहाजा क्या आसान z value. ठीक है, so we'll have two values of c. What will be those values of c? Quadratic करो again splitting the middle term. So it will be 3c square minus 3c minus 7c plus 7 is equal to 0. ठीक है, 3c minus 7c plus 7 is equal to 0. So 3 human the 3 common to be c common 3 into c minus 1 minus 1 into c minus 7 into c minus 1 is equal to 0. Correction must kun jaye. ठीक है, so this will be 3c minus 7 into c minus 1 is equal to 0 which means c is equal to 7 divided by 3 and c is equal to 1. ठीक है, अब 7 divided by 3 वैल्यू करियो कैलकुलेट कास बराबर 2.33 समथिंग. ठीक है, सो क्या एमा 1 is to be 3 दरमियान. Now c is equal to 1. Is this value in the interval open interval 1-3? ये छनात open interval 1-3 इस मज़ यमान कहीं ये क्या जी closed interval इस मज़ यमान. So therefore only point within the interval याद पर क्या f dash of c as whom condition satisfy करा that point is c is equal to 7 divided by 3. ठीक है, so c is equal to 7 divided by 3 is the only point where f dash of c is equal to f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. ठीक है, so this finishes question number 5. ठीक है, एम पाद अगर question number 6 exact as of question number 3 question number 2. ठीक है, ताथ में तो conditions करने काथ पर तुमन दून question पर करें conditions apply. तक वो question number 6. ठीक है, लिखिए अब.